अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। मैं आपकी होस्ट सबा सईद और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अजीम अकरम, द फाउंडर ऑफ अल्फा स्क्वाड टेक्नोलॉजीज। तो आए उनको वेलकम करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट अबाउट हिज बिजनेस जर्नी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तो सर बिल्कुल ठीक सबसे पहले ठाक। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? Alright जी, so I started my career from Faisalabad. Basically I'm from Faisalabad. Education मेरी लाहौर से है. I have been graduated from Comsats University, Lahore, in computer engineering, and from the day one I have been like शुरू से पैशन था कंप्यूटर्स के अंदर काम करने का, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के साथ काम करने का. And after that, after graduation, I got an opportunity in Faisalabad to work in my domain. And then from there, I just started at a very basic level, बहुत ही basic level के ऊपर as an intern start किया. And after some time, definitely for the better opportunities, for the better growth, and for the more aggressive learning, I shifted to Lahore. And यहाँ पर multiple जगहों पर multiple companies के साथ काम करते करते and finally reached to the point where at one day with a couple of my friends we decided to get started with something our own as a startup. So AlphaSquad is not my first startup. Before that, I've already been into a previous company. उसके अंदर हमारे पास एक different pattern था, different development product थी. So the most important thing is that I have always been into the product development and individual side के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, individually developing mobile application is my, you can say that the top thing that I consider it in myself, that in which I'm excellent, or I'm more confident that I can provide a better solution in mobility for any kind of business and such of stuff. So उसके साथ साथ domestic experience के साथ साथ जो international experience था, I got an opportunity to work with the USA Miami-based organization. और वहाँ पर जो opportunity, it was to lead all of the mobile application development team. उनकी completely remote team थी throughout the world, multiple regions से उनके पास multiple resources थे. They had QAs from India, they had developers from Ukraine, Russia, Philippines, Vietnam. So throughout of the world, उनके पास वो तमाम developers थे जिनको I had to manage them. I had to make the deliveries. From in most of the cases, I had to communicate with the clients also to get the on-time deliveries and to make the clients happy with the deliverables. Or maybe sometime like I have to teach the clients that what should be the next phase for this particular idea, that how you should move with it. Wow. So ये तमाम चीजें थी, and right now I'm with AlphaSquad at the moment. Alright, so इस सारे प्रोसेस में जो आपने भी हमें बताया कि आप लीड कर रहे थे, तो ये केस में मुझे बताएं कि कोई आपको चैलेंजेस आपने फेस किए हों। जब लीडिंग पोजीशन में आप होते हैं तो आई थिंक कि कुछ आप पे रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस हवाले से बताएं। Yeah, obviously, like I believe challenges. I don't believe that there is any role जिसमें कोई challenge ना हो. Either you are working on journey or as a role everywhere. अगर I mean like मेरी थोड़ी सी theory इस type की है कि I always take challenges and I always make challenges for myself. If something is not interesting enough that I can consider it as a challenge for myself, then I mean, like, I really don't like doing that stuff. So important thing is that whatever I'm doing is I should always be considering it as a challenge, so that ताकि उसको करने में थोड़ा सा मजा आए. जब उसको हम finish करते हैं तो थोड़ी सी accomplishment की feeling आए कि this is something that I have done. बिल्कुल. So right from starting, like initial career के अंदर challenges आए कि I had to compete with my other colleagues, and definitely positive sense, not in a way like in a negative sense, but in a positive sense to भी अपने टीम में लोगों को बताता होता हूँ कि
the important thing is to challenge yourself rather than you're challenging someone else. You should be challenging yourself so that you can grow better, you can learn better. हमेशा अपने goals खुद से ज़्यादा सेट करें जितनी आपकी कैपेसिटी है. एटलीस्ट आप उसमें से अगर 80% भी आप अचीव कर लेते हैं, so that should be somewhere where the industry or the community may be expecting something less than that. So आपके पास एक अच्छी फीलिंग आती है. और जहाँ तक बात है इंटरनेशनली एक्सपोजर के अंदर जो पर्टिकुलरली चैलेंजेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा फेस किए. सही माइंडसेट ऑफ डूइंग अ वर्क. हमें पता, आप भी जानती हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों को काम करने का तरीका, उनके लाइक हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर एंड हाउ effective they are in doing of their work, कितना accurately, time management कितनी अच्छी होती है. So international team के साथ काम करने से what I got to learn कि how you are more responsible, how you have to be up to the mark when you are listening up some idea. So it is not something like, okay, मैं बहुत अच्छा developer हूँ, I know a lot of things, but that really doesn't mean कि I know everything. So I should always be a very good listener if I want to learn a lot of things. So बहुत सारे लोगों के साथ इंटरनेशनली वर्क करते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किए, डिबेट्स हुई, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा लर्निंग इकट्ठी होती है. सो लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक उसके अंदर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे when you got a lot of things in your bucket, then you feel that yep, this is the outcome of every word that I have spoken to the other people. Yes. Or I have listened to the other people. So that thing or those things के जो हमारे पास इकट्ठी होती हैं, when you see them, when you actually collect them, then you feel a lot much better that okay, I am actually collecting something out of everything that I am doing. बिल्कुल सही है. ठीक है सर, तो ये बताएं कि आप एक तो सबसे पहले अपने बिजनेस का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, ताकि थोड़ी हमारी ऑडियंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए. और साथ साथ ये बता दें कि आपने इसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो आपने कैसे गैदर की. अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चूंकि मेरा सेकंड स्टार्टअप है, दिस इज माय सेकंड स्टार्टअप, और आई हैव ऑलरेडी बीन इनटू अ फर्स्ट स्टार्टअप जहां पर मैंने स्टार्ट किया. वहां पर हम आई वाज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. दैट वाज अ कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे थे. बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी. वी गॉट एन इन्वेस्टर और ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू लॉन्च द एप्लीकेशन, और उसने हमें हमारा पहला एक्सपीरियंस था, जो इन्वेस्टर था उसका भी पहला एक्सपीरियंस था. We got a lot more challenges building up teams, उसकी management करना, how to launch, market करना, pricing, quotation, milestones, so almost everything. So unfortunately it failed. We could not launch it successfully. So we learned a lot of things. I personally learned a lot of things कि हमने कहाँ पर mistakes की, हम probably शायद बहुत अच्छे तरीके से team build ना कर सके, हम probably शायद फीचर्स को और माइलस्टोन्स को उस तरह से लॉक नहीं कर सके जिस तरह से यूजुअली एक प्रोडक्ट के अंदर किया जाता है. तो ये वो सारी लर्निंग थी which I mean like pushed me to the point कि okay, either it should keep on running like this or either I should take some turn from the point where I'm standing and do something else. So वहाँ से I mean like just like आप कह सकती हैं कि fortunately I got an opportunity, मुझे एक नया इन्वेस्टर मिला, and वहाँ पर again एक प्रोडक्ट खड़ी थी आगे which I had to build right from the scratch, right from the initial idea craft करने से लेकर and up to the customer success तक, वहाँ तक उसको बनाना था. So यहाँ से अल्फा स्क्वाड की शुरुआत हुई. I started from 1 or 2 people, शेयर्ड स्पेस से हमने स्टार्ट किया, एंड चलते चलते ग्रो करते करते नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मोर देन 20 पीपल्स वर्किंग इन आवर ओन ऑफिस, और वी आर वर्किंग इनटू द मल्टीपल प्रोडक्ट्स. हमारी कुछ अपनी प्रोडक्ट्स हैं, हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं. उसके अलावा हमारे पास वही प्रोडक्ट जो हमने आज से 3 साल पहले शुरू की थी, इट इज स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली रनिंग, और उसके ऊपर बड़ा एग्रेसिवली हम लोग काम कर रहे हैं. एंड आई मीन लाइक द गुड थिंग इज हमने उस प्रोडक्ट को बनाने से अगेन
एक तो वो चीज़ें जो हमने पिछले स्टार्टअप से सीखी कि हमने एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर हम फेल हुए तो क्या चीज़ें थी जो कि रूट कॉज थी उसके फेलियर का, और उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए जब हमने अगली प्रोडक्ट बनाई, सो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। एंड अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है, और वो सक्सेस स्टोरी इज समथिंग लाइक वी आर बिल्डिंग अप एन ITSM प्रोडक्ट, mobile, web, or everything. So we are again working with multinational team, not only into the Pakistan but in the USA, India and Australia. So हम इन तमाम जगहों पर हमारी टीम है, हमारे डेवलपमेंट लीड्स भी हैं वहाँ पर, हमारे QAs हैं, प्रोडक्ट ऑनर्स हैं, so ये तमाम लोग मिलकर काम करते हैं, तो definitely you learn a lot out of it, and which eventually helps us to grow our team, to grow our skills, and to provide the best optimal solution. I mean, like, what I would say, I know that there are a lot of companies out into the market right now. अभी जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, इसके करीब करीब बहुत ज़्यादा कंपनीज, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज आ चुके हैं, which is very very good for the economy of Pakistan. I really appreciate that कि हर बंदा जो है ना वो इस पॉइंट की तरफ सोच रहा है, but how different we are is something like we try to provide the minimal optimal solution, like we try to avoid making the things complex. We try to keep the things simple, straight, how it can be more useful rather than the I mean, like, just making it more complex for anyone to use it. Why not यार इसको बहुत ज़्यादा सिंपल सा बनाओ, लेमैन बहुत आसानी से यूज कर सके, तो अगर एक आम आदमी, एक कॉमन पर्सन उसको आसानी से यूज कर सकता है, तो देन आई बिलीव कि जो थोड़ा सा नॉलेज रखता है, जो थोड़ा सा टेक साइड के ऊपर चीज़ों को जानता है, मोबाइल कुछ चीज़ें कुछ उसको समझ आती हैं, तो वो तो डेफिनेटली कर ही लेगा. सो माय मेन एंड द कंप्लीट फोकस इज राइट नाउ, I mean, like, what I have learned from my whole 12 years of experience is कि यार just provide the best user experience to your customers. Right. So if you have the best user experience, I would say that if you have built up some supersonic technology behind the scene, it will definitely be usable. Right. But if something is really complex to use, then फिर आपने पीछे जितनी मर्जी जो है ना टेक्नोलॉजी लगाई हो, I don't believe कि वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आउटकम लेकर, कस्टमर आपका फिर उस तरीके से satisfied नहीं होगा ना. Exactly. So customer satisfaction, I believe that always comes with the user experience, that कि उसका experience कैसा होता है, how does it feel for a customer जब वो आपकी application, आपकी software, आपकी बनाई हुई चीज को utilize करता है. बिल्कुल. अच्छा सर, फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको कोई ऐसी टिप्स दें या कोई एडवाइस दें जिससे वो इंस्पायर्ड फील करें या वो मोटिवेटेड फील करें, स्पेशली अगर वो आपकी इंडस्ट्री में सेटअप करना चाह रहे हो बिजनेस. देखें, दो चीज़ें हैं, मैं प्रॉब्ली दो एडवाइस देना चाहता हूँ थ्रू योर प्लेटफॉर्म, जो मैं यूजुअली टाइम टू टाइम अपनी टीम को भी देता रहता हूँ और जहाँ पर मुझे मौका मिलता है. पहली तो एडवाइस है उन यंग स्टूडेंट्स के लिए जो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में या तो अभी they are into their studies, they are into their education right now, or they are just about to finish in 6 months or maybe 1 year, जो डेफिनेटली अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. जी. फर्स्ट पॉइंट इज भाई, your final year project is really important. Wherever you are doing, whatever you are doing, please don't take it for granted. Don't say कि जी मुझे जो है ना वो 4 GPA मेरा आ जाएगा तो मैं बस जो है ना बस किसी न किसी तरह से वो प्रोजेक्ट कर जो टीचर है या जो भी मेरे मार्क्स हैं वो बस आज. ऑनेस्टली मार्केट को इसका कोई फायदा नहीं है, इंडस्ट्री को इसका कोई फायदा नहीं है. मैं यहाँ पर I have taken more than 100 people to my interview, और मैंने जब उनसे पूछता हूँ कि भैया आपने फाइनल प्रोजेक्ट क्या बनाया, मैं जैसे मैं से कि जी मैंने तो ये एक वेबसाइट बनाई है या मैंने तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाया था. यार लाइक आपके पास 1 साल था, यू हैड ऑलमोस्ट 12 months, और 12 months में अगर आप हाफ ऑफ द डे भी अगर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, इवन देन आपके पास बहुत ज्यादा टाइम था. और आजकल तो चीजें आई वुड से कि आसान ही इतनी हो गई हैं. आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आप वहां पर जाएं, जाकर 2-4 हफ्ते लगाकर उस चीज को सीखें और उसको एक्यूरेटली करें, ताकि जब आप
1 साल के बाद प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आए तो आप उसको क्लेम कर सकें, आप कह सकें कि ये चीज मैंने बनाई है एंड दैट इज यूजफुल, मैं उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ, मैंने उसे यूज किया। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सो डोंट वेस्ट योर फाइनल ईयर ऑफ योर यूनिवर्सिटी। आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं तो फाइनल ईयर आपके पूरे 3 साल की, और इनफैक्ट आई वुड से कि पिछले पूरे 15 साल की, इंक्लूडिंग योर 12 years ऑफ एजुकेशन, द प्रीवियस एजुकेशन, और 3 साल आपकी यूनिवर्सिटी, 15 साल आपके जो थ्रू आउट एजुकेशन के है ना, वो एक फाइनल ईयर जो आपकी एफर्ट होती है उसके ऊपर खड़े होते हैं। पहले 13 साल आपने क्या किया डजंट मैटर, लास्ट ईयर आकर आपने वो फाइनल अटेम्प्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कैसा कर गए, अच्छा कर गए, उससे चीजें सीख गए, कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑनेस्टली कंपनीज आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको फर्दर आने, इवन अगर आप कुछ अपना भी शुरू करना चाहते हैं, इवन देन आपको करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। और सेकंड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली लेट्स बी कंसिस्टेंट। मैंने फेलियर भी देखा, आई हैव बीन इनटू दिस startup from past almost 2.5 years, collectively we call it 3 years. इसमें मैंने बहुत ज्यादा ups and downs देखे, बहुत ज्यादा। I have been running it all alone. I do not have any other partner, I do not have any other investor. I have to do a lot of things myself. So ups and downs आते हैं। ये आपको फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आते हैं, आपको टाइम मैनेज करने में बड़ी मुश्किल होती है, आपको और बहुत सारी चीजें करने में, आपको बिजनेस ग्रोथ खुद से देखनी है, आपको ऑपरेशंस खुद से देखने हैं, आपको सो डेफिनेटली इट करती है ये चीज। सो इफ यू आर कंसिस्टेंट, ये एक टाइम पीरियड होता है। आप हमारे पास इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े नाम हैं, सलीम बुखारी है, वकास खान कताफी है, मलिक मुदस्सिर है, अफसे नायक है, देयर आर मेनी पीपल, इनकी सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं इंटरनेट से, यू जस्ट गो लिसन देम। कोई बंदा भी डायरेक्टली सक्सेस फ्लोर के ऊपर लैंड नहीं किया, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई बंदा भी डायरेक्टली सक्सेस फ्लोर के ऊपर आकर नहीं उतरा, एवरीवन had to pass through this situation, ups and downs, financially, family. So please understand this is a process. You have to actually go through it. So अगर तो आप इसमें consistent रह गए तो then you are successful. अगर आप कहीं पे डगमगा गए, आपका जो पैशन है, आपका जो अग्रेशन है, वो कहीं पर शेक हो गया, तो डेफिनेटली इट मे ब्रिंग यू बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, और शायद फिर आपको दोबारा शुरू करना पड़े, और मे बी शायद अगर आप होप ही लूज कर दो, तो दैट इज नॉट इवन अ केस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इफ समवन वांट टू बी। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सर। दिस इज ऑल आई वुड से कि अगर हम इस चीज को फोकस करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द people who want to be an entrepreneurs to learn it out. बिल्कुल सर, आई थिंक ऑडियंस ने बड़ा सीखा होगा इससे, बड़ी इंसाइटफुल टिप्स दिए आपने, थैंक यू सो मच। दिस वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन वी हैड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। इफ यू वांट टू साइन अप फॉर फाउंडर स्टोरीज, आप startupinsider.info पे जाके कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।